Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Ladies and gentlemen, we're starting today's proceedings. Please take your seats. Assalamu alaikum. I'm Bakhtaruddin, Vice Consul at the Pakistan Consulate in Birmingham. Thank you very much for being with us today in solemnly observing Kashmir Black Day to mark the somber occasion. Today, we are hosting a seminar entitled 75 Years of Siege, Where Kashmir Stands. Ladies and gentlemen, today we've joined the speakers online, Mr. Khalid Mahmood, the British parliamentarian, and Mr. Raja Najamul Hussain. Can you hear us, sir? Yes, I can hear you. Thank you. Mr. Najamul Hussain, can you hear us, sir? He might have to rejoin. He'll just rejoin later, probably. Okay, just send him the link. So, Mr. Khalid Mahmood, I think at the very moment. Ladies and gentlemen, we will start today's proceeding with a recitation of a few verses from the Holy Quran by Mr. Muhammad Mubadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, today we are joined by Mr. Ijaz Hussain Shakagari, the last form of PTV and QTV, Pride of Performance, who I will be inviting now for Naat Rasul Maqbool Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इंतहाई खूबसूरत शेर। कलपुर से हमें जिसने खुद पार लगाना है, खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, बेदम यही
पाँच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया मेरी जबान पे जिस दम अली का नाम आया अली का नाम ही आजम वो इसमें आजम है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया न पूछ कैसे कोई शाह मशरकैन बना बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन बना अली का खून लुआबे रसूल नूर बतूल मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना या सय्यदा ज़हरा तू जो माँ में न होती तो जन्नत कभी माँ के पाँव में न होती ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है आखिर कड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 3 अशार आपकी समातों की नजर लगाऊंगा लोए लोए पर ले कुड़िए जे तुद पांडा भरना शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना क्योंकि मियाँ साहब को रूमी कश्मीर कहा जाता है तो कश्मीर के हवाले से दिन है तो मियाँ साहब का शेर सुने सैया नाल में खेडन गईया सैया नाल में खेडन गईया ते टुट गईया ने वंगा मां हुंदी ते होर चढ़ांदी ते प्यो तो मंगदी संगा कमली वाले ने ए फरमाया यारो कर लो खिदमत मां दी जिन्ने काबा तकना होवे ओ तक ले सूरत मां दी Subhanallah. Ladies and gentlemen, today marks the completion of 75 years of occupation of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We observe this day to remember the sacrifices of our Kashmiri brothers and sisters in their just struggle for their right to self-determination. By condemning the ongoing atrocities of Indian occupation forces over the last 7.5 decades. This day, the entire Pakistani nation reaffirms its unwavering support to the people of Kashmir in their just struggle for freedom. Many generations of innocent Kashmiris, men and women and children, have known nothing but Indian brutality, bloodshed and torture. Indian illegally occupied Jammu and Kashmir remains under Indian military siege, exacerbated by draconian curbs on fundamental freedoms of people of the occupied territory. The situation has worsened considerably
over the last 3 years with India's illegal and unilateral actions of August 5, 2019, when India revoked the Article 370 and 35A of its constitution, attacking the distinct Kashmiri identity and culture through illegal demographic changes and economic marginalization. On this day, we express our solidarity while continuing to pay homage to the supreme sacrifices of our brothers and sisters in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. As today marks the 7.5 decades of Indian illegal occupation, marking clampdowns on fundamental rights and freedom, and suspension of civil and political rights, a documentary prepared by the Ministry of Foreign Affairs is being played now. Ladies and gentlemen, today we have an esteemed panel with us to deliberate on the subject. We're joined by Mr. Khalid Mahmood, who is a Labour member of the British Parliament for Birmingham since 2001. As a British parliamentarian, he has always stood in solidarity with the occupied people of Kashmir. He has been awarded Sitara-e-Pakistan, one of the highest civil awards of Pakistan, as an acknowledgement of his significant contributions to the Kashmir cause, among others. He has been speaking for the Kashmir cause with the depth, compassion, and objectivity we so desire on the subject. After Mr. Mahmood, we will be listening from Mr. Raja Najabat Hussain, Chairman, Jammu and Kashmir Self-Determination Movement International. His organization has been striving to highlight the plight of Kashmiri people on the international stage and raising the voice against India's brutality. The government of Pakistan has awarded Sitara-e-Pakistan to Mr. Hussain as an acknowledgement of his significant contributions to the Kashmir cause. The names of both of our speakers have been synonymous with the cause they are fighting for the liberation of Kashmir. The Pakistan Consulate in Birmingham is honored to have you with us. We thank you very much for your valuable participation. Ladies and gentlemen, I would now like to invite Madam Sadia Malik, the Acting Consul General of Pakistan in Birmingham, to read out the messages of the President and the Prime Minister of Pakistan on this solemn occasion. Thank you, Osama. Assalamu alaikum, everyone. This is a message from Dr. Arif Ali, President of the Islamic Republic of Pakistan, on Kashmir Black Day, 27th October 2022. This year, 27th October marks the completion of 75 years of illegal occupation of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We observe Kashmir Black Day to remember the sacrifices of our Kashmiri brothers and sisters in their just struggle for their right to self-determination, by condemning the ongoing atrocities of Indian occupation forces over the last 7.5 decades. This day, the entire Pakistani nation reaffirms its unwavering support to our Kashmiri brothers and sisters in their just struggle for freedom. Many generations of innocent Kashmiri men, women, and children have known nothing but Indian brutality, bloodshed, and torture. Indian illegally occupied Jammu and Kashmir remains under Indian military siege.
exacerbated by draconian curbs on fundamental freedoms of the people of the occupied territory. The situation has worsened considerably over the last 3 years with India's illegal unilateral actions of 5th August 2019, which stripped Jammu and Kashmir of its special status under the Indian Constitution. These actions violate the United Nations Security Council resolutions, which stipulate that the final disposition of the state of Jammu and Kashmir would be made in accordance with the will of the people of Kashmir through a free and impartial plebiscite to be conducted under the auspices of the United Nations. Today, Jammu and Kashmir has been subjected to unprecedented restrictions on freedom of speech, fake encounters, cordon and search operations, custodial torture and deaths, enforced disappearances, incarceration of senior Kashmiri leadership and young boys, use of pellet guns, especially targeting the Kashmiri youth, destruction and burning of houses to inflict collective punishment on the Kashmiris, and other methods of subjugation. Over 690 innocent Kashmiris have died in extrajudicial killings at the hands of Indian occupation forces since 5th August 2019. For the last 7 decades, the Jammu and Kashmir dispute has been a battle of hope against overwhelming odds, courage against fear, and sacrifice against tyranny. Our Kashmiri brothers and sisters have displayed exemplary courage and endurance, braving the worst forms of persecution. We value the blood of thousands of Kashmiris who have sacrificed their lives for decades in the pursuit of freedom from India's illegal occupation. Kashmiri brothers and sisters will always find Pakistan voicing the cause of Kashmir dispute at every available forum. Pakistan, while demanding an immediate reversal of the Indian government's illegal and unilateral actions of 5th August 2019, also calls upon the international community to take practical steps to hold India accountable for its human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and play its part in facilitating a peaceful and just resolution of the long-standing dispute of Jammu and Kashmir in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Now I'll read for you the message of the Prime Minister of Pakistan on this occasion. वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 27 अक्टूबर 2022 यौम-ए-सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम। आज बोझल दिल के साथ हम कश्मीर के हवाले से एक और यौम-ए-सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को 75 साल पहले भारत ने जबरदस्ती अपनी फौजें गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतार दी थी और तब से वो इस इलाके पर जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जा जारी रखे हुए हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने जबरदस्ती कब्जे को बरकरार रखने के लिए भारत ने इलाके में 9 लाख से ज्यादा मुसल्लह फौज तैनात कर रखी है। तशद्दुद, गैर कानूनी नजरबंदियां, झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने, काले कवानीन के तहत ताकत के अंधा इस्तेमाल और कश्मीरियों की अलग सकाफती और मजहबी शनाख्त खत्म करने के लिए मुनाज़िम कार्रवाइयां मकबूजा इलाके पर भारत के जालिमाना कब्जे की हकीकी निशानदेही करती हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी और एकतरफा तरीके से खत्म करने के बाद की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। गुज़िश्ता 3 सालों में भारत काबिज अफवाज के हाथों तकरीबन 690 बेगुनाह कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। मुमताज हुर्रियत रहनुमा गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत या घरों में नजरबंद है। भारत जाली डोमिसाइल के जरिए के इजरा, जायदाद के कवानीन में तब्दीली, इंतखाबी इज़्लाम में तब्दीली, हिंदू अक्सरियती इलाकों के लिए रियासती असम्बली में नई नशिस्तें पैदा करने और गैर कश्मीरी बाशिंदों के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली के लिए काबिल मुज़म्मत इक़दामात कर रहा है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरी बेमिसाल कुर्बानियों और महकूमी से इनकार करते हुए भारतीय जाहिलियत का मुकाबला कर रहे हैं। तारीख इस हकीकत की गवाह है कि भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान और आलमी बिरादरी से सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों की पासदारी और अपने वादों पर अमल दरामद करने से काबिज ताकतें इनकारी हैं। तारीख इस बात की भी गवाह है कि भारत ने हमेशा गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है और अपने वादों की पासदारी को मुकम्मल तौर पर छुटलाया है।
जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा 7.5 अशरे से ज्यादा अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ अपने वादे पर कायम है और इसने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल आवाज बुलंद की है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी पर मुसलसल जोर देता रहा है कि वह मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मसले पर अपना किरदार अदा करे और जिम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान ने मकबूजा इलाकों में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाई है और 5 अगस्त 2019 के भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का वाहिद हल इस बात को यकीनी बनाने में मुज़मर है कि कश्मीरियों को उनकी ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिसाब राय के जमहूरी अमल के जरिए अपने हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। कश्मीर कॉज के हवाले से पाकिस्तान अपनी भरपूर हिमायत जारी रखे हुए है। हमारा सबसे बड़ा असासा इस बुनियादी मसले पर कौमी इत्तेफाक राय है। दर हकीकत कश्मीर से मोहब्बत और इस मुनसिफाना मकसद से वफादारी हमारे माशरे के हर तबके का लाजमी जुज़ है। यही वजह थी कि हमारे प्यारे कायद ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरा करार दिया। इस मौके पर तमाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए मेरा पैगाम है, पाकिस्तान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। हम दुनिया के सामने आपकी आवाज बनेंगे। हमारी हिमायत और यकजहती बरकरार है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादियत का जायज हक नहीं मिल जाता और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। थैंक यू। Thank you very much, madam. Ladies and gentlemen, I will now read out the message of the Foreign Minister of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Bilawal Bhutto Zardari, on the Kashmir Black Day. Today marks the 75th somber anniversary of India's illegal occupation of the illegally occupied Jammu and Kashmir against their will. 75 years ago, on 27th October 1947, India forcibly landed its troops in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and continues to forcibly and illegally occupy this territory ever since. For over 7 decades, the Jammu and Kashmir dispute has been a battle of hope against overwhelming odds, of courage against fear, and of sacrifice against tyranny. Thousands of innocent Kashmiri men, women, and children have lost their lives at the hands of Indian brutality. We pay rich tribute to all the martyrs for their ultimate sacrifice and to their families for their resolve and perseverance. India's intensified campaign to force demographic changes in IIOJK is in full swing since the 5th August 2019, when it revoked Article 370 and 35A of its constitution that had granted special status to IIOJK. The events of the last 3 years have included repressive measures such as outrageous gerrymandering to create Hindu-dominated constituencies in Muslim-majority areas, issuance of millions of fake domicile certificates to non-Kashmiris, new laws on ownership of land and property, and expansion of voter rolls to include non-Kashmiri residents. These undemocratic and illegal measures are an indirect contravention of UN resolutions and the Fourth Geneva Convention. They signify nothing but India's malicious campaign to change the distinct Kashmiri identity. With 900,000 troops, IIOJK has become one of the most heavily militarized regions of the world. Nearly 690 Kashmiris have lost their lives in extrajudicial killings since 5th August 2019, including 170 just this year. The true representatives of the Kashmiri people have been arbitrarily detained for years. However, India's intransigence and brutality in the IIOJK cannot continue indefinitely. To this day, India has failed to attain its objectives of subjugating the Kashmiri people. Kashmiris have yearned for freedom while confronting the most brutal forms of oppression at the hands of Indian occupation forces. The innumerable sacrifices and resilience of the people in Jammu and Kashmir have thwarted all Indian attempts of coercion and control. The resolute spirit of the people of Kashmir remains intact. 3 successive generations of Kashmiris have waited
for the world and the United Nations to deliver. Pakistan calls upon the international community to take practical steps to hold India accountable, and the Indian government must reverse the unilateral and illegal actions of 5th August 2019, stop its egregious human rights violations in IIOJK, repeal the draconian laws, and implement the relevant UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. I promise my Kashmiri brothers and sisters that their struggle and their sacrifices will not go in vain. The world can no more eschew its responsibility. We owe it to the Kashmiris. Thank you very much. Ladies and gentlemen, today I hope we will be able to answer, however imperfectly, some very difficult questions that are in the mind of our audience, who have joined us today, largely Kashmiris and Pakistanis. What we intend to explore is that why, after 75 years, are the Kashmiris still invisible to the world? Why, despite all the efforts, Kashmiri lives still don't matter enough to move the international community at the UN? What is that we need to do to awaken the conscience of the international community against the brutality of Indian occupation forces in IIOJK? I would now like to hand over the stage to MP Khalid Mahmood with the following pointer. The British Parliament in general, and the Labour Party in particular, has stood up for the rights of people and groups facing oppression or marginalization. Broadly, how do you see, sir, the role of Britain in ensuring this tradition is upheld with regards to Kashmir? And specifically, how do you see your role in shaping and informing the debate within the British Parliament and the Labour Party about the situation of Kashmiri people? What do you think is to be done to ensure that this conflict is also discussed and debated the way it should be in the international media and within your party? With this, I hand over the floor to you, MP Khalid Mahmood. Bismillahir Rahmanir Rahim. The Honorable Counsel General and the Deputy Counsel General, Raja Najabat Saab, I don't know who the esteemed guests are, but certainly in terms of ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Before I start the issue of Kashmir, can I just say one thing? That is that how privileged we are today that in Birmingham, we have two excellent ladies leading our office in Birmingham for the first time ever. And I think as Kashmiris, as Pakistanis, we should appreciate the role of women in our society, and the fact that we have two great officers from the Foreign Service in Pakistan leading the largest city across the United Kingdom. And I certainly hope that they will excel further in their own careers, and hopefully we'll see them both as ambassadors somewhere near soon. So I just want to make that specific point, because I think sometimes we don't make those points where they're necessary to make. I would like to say, in terms of Kashmir, again, another year passes. Another year passes, or nothing happens. Nothing is delivered. The 2019 lockdown still persists. Indian aggression continues. Abuse of human rights, civil liberties continues. So what do we do every year when we get together? We make fine speeches, we have great messages from the office holders in Pakistan and councillors and MPs and other esteemed guests. But what do we have to do to make better the lives of those people who are suffering day in, day out? I think that's today for me is the most important question. Well, how do we protect the women from rape and injury? Has a tool of collective punishment, which is banned by the United Nations, which is banned by the Geneva Convention. But yet, nobody outside is prepared to look at them. Missing people regularly go missing, tortured and killed. People placed in jails right across India where they have no access to their families. How in any terms is that human? How can that country call itself the largest democracy in the world? Because I, for one, don't believe
that is the case. It is not a democracy. It is an autocracy of pain, horror, and torture. And that's what it deserves to be called. And again, I will call out this year the United Nations and its human rights commissioners for inaction, not the ability to do what is necessary for the people of Kashmir, for the fact that they continue to use words but have no action. We can't have an active United Nations force on the border. The fact that Indian forces continue to bomb across the border, shell across the border, shoot across the border continues. And yet they complain that there are people coming through. If somebody was to see the border post that they have erected, it has 5 different types of obstacles, fences for people to stop coming out. It is mined. It has electronic features. It has barbed wire. It has other obstacles which people can't go through. A width of 2 miles. It is lit so bright at night that if you're a satellite, forget the wall of China, you can't see that at night. At night you can see the line of control. How much electricity and pollution is wasted, yet they still say there are people coming through in terms of terror. There is no terrorism going across to the occupied Kashmir. The only thing that happens is the failure and the continued failure of the Indian forces and excuses to punish the people of Kashmir. So I will finally confirm that the United Nations is not fit for purpose. But what I will say also is, are we fit for purpose? What do we do to ensure that the people that need our support, that need our voice, we can say things, but our voice is heard. Our voice is heard or need to be heard. Yesterday, both myself and Tahir Ali, members of parliament from Birmingham, were able to participate in a debate on trade with India. And both of us made the similar point, the fact that there can be no trade with India unless the issue of human rights in Kashmir are resolved, issue of human rights and civil liberties across the whole of India, including the Christian community, the Dalit community, the Sikh community, is resolved. And I think we need to push desperately to do that. I will make this a feature in the next meeting that we have, the all-party parliamentary group on Kashmir. And I will also request Raja Najabat Saab, who's done a phenomenal work, almost more than 20, 30 years that he's been there, that I've been in politics, I've seen him. And I think he deserves the accolades and the award that is received from the Pakistan government because he single-handedly continued to do this. What I will ask him is today that we do one thing, that with the all-party parliamentary group, we only entertain the Kashmir community as a one block. I want people to be affiliated to Raja Najabat and the all-party parliamentary group. If they're not affiliated, they will not be a part of the movement. Once that is affiliated, we can get all the parliamentarians together rather than being divided in different groups, go along with different members of parliament and lords, to be united. Because this is the time we need to get all our members from the House of Commons and from the Lords and the councillors, all to be united on a single agenda. We wasted far too much time. And also I say this to you, that the next APPG meeting, I'm sure you will be there, and so will I, that we form this group where we have an affiliation to the great work that you've done and the APPG continues to do. And so we do that by getting people together. Let's have a single voice that we can present to the government and say to them that you can't have a trade deal with a country that has a horrendous record of human rights and civil liberties. So when you can flash out any other country that is a Muslim country and say they're not fit for purpose because they're human rights, why do you turn a blind eye
when it comes to India. That is the issue that we've got to put at the forefront. And Rajya Sabha has said this, and I said this as well. We've got too many organizations. Let's please stick on a single agenda. I can say about Rajan Jawad Sahab because he's worked throughout his life. But I don't want new people coming in for their own sake of elevation in the community, photographs and speeches so they can say they're another Kashmiri organization. It has to be organizations that deliver. As I said again, the longer we talk, the suffering continues to those people. So let's make a pledge on today, on this day, that we form a single organization. You can be organized in whichever way you want, but I want you to affiliate with the All-Party Parliamentary Group with Rajan Jawad Sahab, who's worked tremendously hard with the All-Party Parliamentary Group, to get together, have an affiliation, have a single point of meeting. Whenever we have a meeting, we have one clear meeting, have one clear agenda to work on that. And as many people from all the representative organizations want to come, can come, and I hope they will continue to come. Let's write to all of our MPs, please. Let's write to, emails are very easy. They're in your home. You don't even have to go and see the member of parliament. Find out from the parliamentary internet who your MPs, if you don't know, I'm sure most people do, and write to them and ask them, what have you done about Kashmir? What are you looking at in terms of human rights and civil liberties? So please, let's not just make it one day or a particular instance in the history of Kashmir, which is not very pleasant. Let's do something that is constructive. Let's do something that can actually help those people. 75 years. If somebody was a baby then, now they'd be a significantly old person by now. A whole life through this torture and abuse is too long a life to live. So I urge everybody here today, please, let's get together and let's mark this as a point for action to move forward and to try and do at least in steps to move towards supporting the people of Maqbuza Kashmir, the occupied Kashmir by Indians, and see that we can deliver something for them. Let's give them real hope and real opportunity that they will have a quality of life that all of us enjoy day in, day out. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Khalid Mahmood, for such forceful advocacy of the cause and brilliant articulation of how the conflict of Kashmir needs to be looked at. A united voice is the way forward. Ladies and gentlemen, the cumbersome brunt of the violence in the Kashmir Valley has taken a toll on its people, who not only deal with the foreign occupation, but also cope with loss and day-to-day indignities inflicted by direct and indirect systemic state violence. Therefore, in order to highlight and possibly ameliorate the conditions of the abandoned people of Kashmir, it is very important to discuss and debate the consequences of this conflict on its people. The voices of the Kashmiri people needs to be heard in the more comprehensive geopolitical discourse on the valley. Our goal is to build awareness regarding the socio-political and humanitarian issues faced by the people of Kashmir by bringing together the voices that are sympathetic in order to provoke conversations that matter. With this, ladies and gentlemen, I hand over the floor to Mr. Fahim Kiani, President, Tehreek-e-Kashmir UK and pioneer of virtual Kashmir diplomacy. Bismillahirrahmanirrahim. Mohtharma Sadia Malik Saiba, Head of Commission, Birmingham Consulate, Mukhtar Mir Saiba, Vice Consul General of Birmingham Consulate, Alam Mahmood MP Sahab, Chaudhry Shanwaz Sahab, President All Parties Coordination Committee, Rajan Jawad Sahab, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. I'm going to speak in Urdu because everybody understands Urdu, because this is our national language. लेकिन भारत का जो अब सिनेरियो बन रहा है, he is using भारत जो इकोनॉमिकल मसल्स को यूज कर रहा है,
पूरी दुनिया को प्रेशराइज करने के लिए कि मेरे इतने बड़े इकोनॉमिकल मसल्स हैं और ये जो प्रेशर बिल्डिंग जो टैक्टिक्स है भारत का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि अपनी जो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की जो मार्केट है उसको सेल करता है और इस सेल करने के बावजूद हमने देखा है कि इंटरनेशनली जो भारत का जो फोर्स नैरेटिव है कश्मीर पर वो रिजेक्ट हो रहा है। भारत का फोर्स नैरेटिव क्या है कश्मीर पर कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। मैं समझता हूं कि ये जो नैरेटिव है इसको अगर चैलेंज किया है तो ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानियों ने जो 10 मिलियन की तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हम देखते हैं बहसीयत कश्मीरी जो पाकिस्तान की जो ब्लेसिंग है कश्मीर कॉज के पीछे उसकी इम्पोर्टेंस का हम रियलाइज करते हैं। डिस्पाइट मैं चाहूँ तो घंटों तनकीदी नुक्ता नजर से बात कर सकता हूँ लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम कश्मीरी जो पाकिस्तान की जो बैकिंग है उसको हम देखते हैं कि आपके सामने पैलेस्टाइन का इशू मौजूद है। पैलेस्टाइन के इशू का जो इंटरनेशनल अरीना में उसका इम्पैक्ट है वो भी आपके सामने मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि यरूशलेम के अंदर एम्बेसी बनाऊंगा, यूरोपियन 11 ममालिक विद इन 12 आवर्स उसकी स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन आता है, तमाम अमेरिका के जो स्टांस है उसको कंडेम करते हैं, सिर्फ 2 वोट्स इजराइल और अमेरिका के वहां मौजूद होते हैं। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, इतनी बड़ी कंपेन दुनिया के अंदर उनकी होने के बावजूद, लेकिन हम देखते हैं कि तारीख हमें बताती है कि जब इजिप्ट जैसा मुल्क, मजबूत मुल्क जो फलस्तीन के पीछे मौजूद था, जब उसने कैंप डेविड का मायदा किया, जिमी कार्टर उसका सालिस बना, अनवर सादात इजिप्ट का वहां प्रेसिडेंट मौजूद था, इजरायली प्राइम मिनिस्टर मौजूद था। जिस दिन से इजिप्ट ने विड्रॉ किया है पैलेस्टाइन इशू पर, हम देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन इशू दुनिया में रेज हो रहा है लेकिन पैलेस्टाइन की जमीन श्रिंक होती जा रही है और आज फलस्तीन का हाल आपका सामने है। तो इससे साबित हुआ कि दुनिया के अंदर फैसले ताकत की बुनियाद पर होते हैं, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट सबमिट करने से कुछ नहीं बनता। यकीनन ये नैरेटिव बिल्डिंग में हमने इसके ऊपर हमने इंडिया को रिजेक्ट किया है, उसको शिकस्त दी है कि आज हमारा दुनिया में नैरेटिव चलता है। आज दुनिया हमारा नैरेटिव ये मानती है कि कश्मीर एक मतनाज़ा इलाका है और कश्मीरियों की स्ट्रगल लेजिटिमेट स्ट्रगल है और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज हक का मिलना चाहिए। लेकिन आज़ादी ताकत की बुनियाद मिलती है और हमने देखा कि पाकिस्तान हमारी पुष्ट पे मौजूद है और एटमी पाकिस्तान हमारी पुष्ट पे मौजूद है। अगर एटमी पाकिस्तान हमारी पुष्ट पे मौजूद ना होता तो आज हमारी हालत, मेरा तल्लक, चौधरी शहनवाज साहब का तल्लक, हम सब लोगों का तल्लक जहाँ जो मौजूद है लिबरेटेड पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से है, आजाद खित्ते से है, तो आज हमारा हाल भी फलस्तीनियों जैसा होता। तो मैं समझता हूँ कि हमने 1 इंच जमीन फतह नहीं की लेकिन 1 इंच जमीन हमने लूज भी नहीं की। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजात जबर की रात की सुबह होती है। इसी तरह इस जुल्म की, इस गुलामी की रात का सूरज का खात्मा आजादी के सूरज से जरूर होगा और इंशाअल्लाह तुलू होगा। लेकिन आखिर में मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने इस बरतानिया के अंदर, आपने इस यूरोप के अंदर, आपने इस इंटरनेशनल अरीना के अंदर आपने एक मूवमेंट नेल्सन मंडेला की देखी, खुसूसन बरतानिया की बात करता हूं। मेंबर पार्लियामेंट यहाँ मौजूद है, यही पार्लियामेंट नेल्सन मंडेला के बारे में क्या कहते थे, नेल्सन मंडेला दहशतगर्द है, टेररिस्ट है। यही मीडिया, जिस मीडिया में हम चाहते हैं कि हमारी 2 लाइनें छप जाएं,
यही मीडिया नेल्सन मंडेला को दहशतगर्द कहते थे। तो इससे क्या साबित हुआ कि जिस पार्लियामेंट के अंदर आज हम 50 MP, 80 MP, 100 MP इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिस मीडिया पर हम अपने अगर हक में अगर खबर नहीं लगवा सकते तो मुखालफत में भी आज तक खबर नहीं लगी। लेकिन उन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नेल्सन मंडेला के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन हमने देखा कि दुनिया का नैरेटिव तब्दील हुआ कि जब नेल्सन मंडेला के हक में लोग लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में निकले, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों तक दुनिया भर की एम्बेसीज के सामने बैठे। तो मैं समझता हूँ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमने आजादी की तहरीक में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो मैं समझता हूँ कि हमने उसका हक अदा नहीं किया। जब 1 लाख बंदा लंदन की सड़कों पर एक हफ्ता बैठ जाएगा और फिर देखेंगे कि ये नैरेटिव किस तरह तब्दील नहीं होता। हम ये देख रहे हैं कि हम इन पार्टीज की पॉलिसीज को अब तक तब्दील नहीं कर सके। जब भी कोई भी पार्टी, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो, चाहे लेबर पार्टी हो, जब ये पावर्स में होती हैं, इन्हीं के फौरन आज मेरे पास कश्मीर हाउस में आए, गुज़िश्ता 40 साल का, 45 साल का रिकॉर्ड वहां मौजूद होगा। वही जो लेटर 1990 के अंदर में लिखते थे, आज वही कॉपी एंड पेस्ट लेटर आज भी वही मिलता है कि दिस इज अ बायलैटरल इशू, और ये पाकिस्तान और इंडिया मिलकर बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करें। यकीनन मैं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के उन एमपीज को, उन काउंसलर्स को खराजे तहसीन पेश करता हूँ, लिबरल डेमोक्रेट्स के उन काउंसलर और तमाम पार्टीज को, स्कॉटिश नेशनल पार्टीज के, कि उनकी पार्टी पॉलिसी डिफरेंट होने के बावजूद भी आज वो ये समझते हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, मेन फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी वो ये कहते हैं कि ये इशू बायलैटरल इशू नहीं है, ये कश्मीरियों के हक उदरादियत का इशू है। लेकिन अफसोस ये होता है, मैं पिछले दिनों में एक एमपी से रास्ते में था, तो वो बहुत अच्छी, उसने बहुत अच्छी स्ट्रगल की है, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन अचानक उसने कहा कि मैं तो आजकल फ्रंट बेंच एमपी हूँ, तो मेरे लिए कश्मीर में बोलना मुश्किल है। ये जब सेकंड और थर्ड और फोर्थ बेंच में होते हैं तो कश्मीर पर हर हवाले से बोलते हैं, लेकिन जब फ्रंट बेंच हो जाते हैं, क्योंकि फ्रंट बेंच एमपी जो पार्टी की पॉलिसी पर का इजहार करता है, तो हमारी फतह उस वक्त होगी जब फ्रंट बेंच एमपी उसी तरह वोकल होंगे जिस तरह वोकल बैक बेंचेस के एमपीज होंगे। तो एक मरतबा फिर मैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट का, पाकिस्तान ने जो किरदार कश्मीर पर अदा किया है उसको मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और हर, यानी कि आपको 1, 2, 4 अफराद से शिकायत हो सकती है, लेकिन रियासत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट, कश्मीर के साथ कमिटमेंट दिखाई है, उसको हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। और हर फोरम के ऊपर देखें, याद रखें आप, क्योंकि मेरे सामने यहाँ ज्यादा आजाद कश्मीर के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया का ये मिशन है कि कश्मीर इशू मस्ट बी डिसॉल्व एट इंटरनेशनल एरिना, और पाकिस्तान का ये स्टांस है कि कश्मीर इशू मस्ट बी रिजॉल्व और मैक्सिमाइज इसको डिस्कस होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। बाकी जो कमियां कोताहियां हैं वो सिर्फ कश्मीर इशू पे आपको नजर नहीं आएंगी, बाकी भी सेक्टर्स के ऊपर नजर आती हैं। तो ये कोई डेलिब्रेशन के साथ या कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट कश्मीर इशू के साथ नहीं है। ये जो कमियां कोताहियां हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर हम ओवरकम आएंगे, करेंगे, और बंद कमरों में बैठकर हमें ये डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन दुश्मन को एक मुत्तहिदा पैगाम, एक यूनाइटेड पैगाम हमें देना चाहिए, और इंशाल्लाह फोरम पे भी देंगे। आज हमने ऑल पार्टीज शहबाज साहब की क़यादत में इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर मुजाहरा किया, लंदन में भी हम मुजाहरा हो रहा है, कश्मीर में, पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त में 4 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर चुका हूँ। तो एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन मौजूद है। तो एक मरतबा फिर मैं कॉन्सुलेट बर्मिंघम कॉन्सुलेट का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया और अपने हालात का इजहार करने का। बहुत शुक्रिया। Thank you very much for your thought-provoking remarks. Ladies and gentlemen,
the Kashmiri youth are extremely vulnerable to the repercussion of excessive militarization, surveillance, suspicion, joblessness, and torn families. Beyond the loss of lives, youth across Kashmir suffers from the loss of agency in negotiating their everyday lives. They find it difficult to share their experiences due to the fear of consequences as the security agencies are omnipresent. The Kashmiri youth is caught in a vicious cycle of violence and uncertainty. Since Jammu and Kashmir has been confronted with a conflicting atmosphere and political chaos for 3 decades now, youth have turned more volatile. On the one hand, they are more worried about the future, politically conscious, and they desire change in the overall system. Still, on the other hand, their identity and personality crisis amidst the accused challenges of the survival has turned them into sheer despondent and alienated beings. A complex web of repercussions ensnares the lives of Kashmiri youth, who have to make peace with the existing imposed socio-cultural order in the society because of the conflict. Their lives are impacted distinctly in almost every situation, yet their particular problems are often neglected both by society and international media. Agency, economic stability, accessing social benefits, everything becomes yet another traumatic experience. With this, I hand over the floor to Mr. Rajan Najabat Hussain. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम की हमारी दोनों ख़वातीन लीडरान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और फिर फ्रंट सीट पे बैठी हुई अपनी तमाम बहनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जिस तरह दुनिया भर में बैठे हुए, दुनिया भर में रहते हुए तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती के इज़हार के लिए और भारत के खिलाफ एक और दिन गुजारने के लिए कि हमने 75 साल पहले जो जुल्म, जो जबर, जिस तरीके से भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई थी, आज फिर एक बार हम उस बात पे ना सिर्फ एहतजाज करते हैं बल्कि पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों पे जो जबर वहाँ से शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। और जिस तरह मोहतरमा हमारी मुख्तार मीर साहिबा ने बताया कि हमारा सबसे जो इस जदोजहद में सबसे बड़ा जो तबका हमारा मुतासर हुआ वो मकबूजा कश्मीर का नौजवान, मकबूजा कश्मीर की खवातीन और मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप है। और उन तमाम लोगों की कुर्बानियां, उन तमाम लोगों की जदोजहद इस बात की मुतकाजी है कि हम जिस तरह आज़ाद शहरी की हैसियत से, आज़ाद हैसियत से इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं। मैं खालिद महमूद साहब की इस बात की तायीद करता हूँ कि हमें मुख्तलिफ लोग हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ काबिलियत के लोग हैं, अहलियत के लोग हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पे जो काम कर रही हैं उनका काम जारी रहना चाहिए। हमारी आज़ादी की तहरीक में हर शख्स का, हर तंजीम का, हर मकतब फ़िक्र का एक रोल है, लेकिन मैं समझता हूँ जिसके पास जो एक्सपर्टी है वो उसी काम को अगर आगे लेकर चले। पाकिस्तान के जो मिशन हमारी सपोर्ट करते हैं, जो मिशन हमारे लिए ये मौके प्रोवाइड करते हैं, उन मौके पे हमें बर्मिंघम के लोगों से ये अपील करूंगा कि बर्मिंघम, जहाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने आपको मौका दिया, आपके पास 2 बड़ी टैलेंटेड खवातीन को भेजा, इसी तरह पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में भी और मुसलसल ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, मैं सबके साथ काम करता हूं और मैंने महसूस किया है कि अगर हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग, हमारी तंजीमें इनके साथ तावन करें तो हम वो मकासद हासिल कर सकते हैं
जिनके लिए पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और कश्मीरियों की तहरीक एक दूसरे के साथ मुंसलिक होकर बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। मैं इस मौके पर खुसूसी तौर पर चौधरी शाहनवाज साहब जो कुल जमाती राब्ता कमेटी के सदर हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आज के हवाले से जो उन्होंने मुश्तरका मुजाहरे का इत्माम किया और फिर यहाँ भी पहुँचे। और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो खालिद साहब ने तजवीज़ पेश की है, मैं अपने आप को नुमाइंदा नहीं समझता, मैं कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी को कश्मीरियों की नुमाइंदा तंजीम समझता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ऑल पार्टीज कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है उसका एक बड़ा किरदार है। जब हमारे दोस्तों ने इसकी बुनियाद 86 में रखी तो उस वक्त से लेकर 95 तक हमारी ये हालत थी कि 80 से 90 और 120 तक मेंबरान पार्लियामेंट हमारी हर कॉन्फ्रेंस में, हर डिनर में, हर इजलास में मौजूद होते थे और हर शहर में 10, 12, 15, 5, 7 पार्लियामेंटेरियन होते थे। आज क्या बात है कि हमारी वो पोजीशन नहीं रही, उसमें कुछ हमारी तकसीम का मैं समझता हूँ एलिमेंट शामिल है, कुछ हमारी कोताहियाँ भी हैं, कुछ हिंदुस्तान की लॉबिंग का स्टाइल भी कोई थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास भी वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास भी बाशऊर और समझदार लोगों की कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे काउंसलर्स, पार्लियामेंटेरियन और ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वसातत से हम बरतानिया की तीनों सियासी जमातों में, बल्कि चौथी जो अब स्कॉटिश नेशनल पार्टी है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आयरलैंड के मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो भी मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। इन सब को बेफिक्र जो दूसरे मज़हब के लोग यहाँ बरतानिया में अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं, उन्हीं की तरह हम भी कश्मीरी अगर मुतहद्द मुनज़्ज़म होकर अपने हर हल्के में, हर शहर में, हर रीजन में अपने लोगों को लॉबी करें तो कोई वजह नहीं कि हम एक मुनज़्ज़म आवाज़ बनकर हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, यूनाइटेड नेशन के जिनेवा के वानों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, हेग में इंटरनेशनल हाई कोर्ट में जा सकें। फिर इसी तरह पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हम वो किरदार अदा कर सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बैठा हुआ कश्मीरी नहीं अदा कर सकता। मैं समझता हूँ हम पे ज्यादा फर्ज आयद होता है और इसी मुनासिबत से मैं फिर एक बार अपील करूंगा कि ये मेरी जो बहनें बैठी हुई हैं ये कोशिश करें हम इनकी लीडरशिप में यहाँ बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, लंदन में खवातीन की कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, यूथ की कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। और मैं अपने बुजुर्गों और भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हमने जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुदारदियत में खवातीन को लीड रोल दिया हुआ है, लेकिन किसी का घर अगर खातून के बगैर नहीं चल सकता तो कोई तंजीम, कोई अदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी खवातीन के बगैर, उन्हें हमें शामिल करने की जरूरत है, प्रोफेशनल्स को शामिल करने की जरूरत है। आज वक्त की जरूरत यह है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के उन मजलूम बहन भाइयों के लिए अपने फरोई मामलात को, अपनी लीडरशिप को, अपनी ज़ातियात को, अपने नजरियात को और आज़ाद कश्मीर के साथ अपनी वाबस्तगी को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करें। मकबूजा कश्मीर के अवाम का केस मैं समझता हूँ इतना सीधा साधा है कि अगर हम दुनिया की जिस भी जगह पर जाएं उनका केस पेश करें तो लोग सुनने के लिए तैयार होंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान अपने आप को एक जालिम, जाबर और गैर जमहूरी साबित कर चुका है। दुनिया हिंदुस्तान के काले कारनामों से आगाह है, लेकिन उनको यादानी कराने की जरूरत है, उन्हें बावर कराने की जरूरत है कि हिंदुस्तान ने ये न सिर्फ कश्मीर के अवाम के साथ किया है बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के साथ कर रहा है। हिंदुस्तान का असली चेहरा दिखाने की जरूरत है और उसके लिए हमें मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। मैं इस मौके पर दोबारा पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम की इंतजामिया का शुक्रिया जिन्होंने बात की, उनका भी, खालिद साहब का भी, तमाम पार्लियामेंटेरियन का भी, इंतजामी साहब का, शाहनवाज साहब का और जो लोग हाज़रीन बैठे हुए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या
हमारी बातें सुनी, और मैं तो करूंगा कि आप हम सब मिलकर एक दूसरे के पाकिस्तान के साथ इलाज और तकमील पाकिस्तान की अपनी Much, Mr. Najabat, for your heartfelt remarks. Ladies and gentlemen, today we have joined community leaders who have been speaking about the cause of Kashmir with the depth, compassion, and objectivity we so desire on the subject. But due to the paucity of time, we won't be able to invite all of them to express themselves. All of you, thank you very much for your invaluable participation today. We will now be playing a special musical tribute to the people of IIOJK and Kashmiris across the world, sung by Zohaib Zaman in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs. We salute the resilient spirit of the Kashmiri people who continue to stand firm in their total rejection of Indian occupation. My
It's on. Ladies and gentlemen, we believe the voices of our speakers and the participation of all of you has been a critical addition to the subject matter. Thank you very much for being with us today to express solidarity with the occupied people of Kashmir. We will end the session with a performance of young children of the Eel Club, dressed in Kashmiri attire under the guidance and leadership of Ms. Nashaba Yaqub Raja, who are here to pay a special tribute to the resilient Kashmiri spirit facing Indian occupation with utmost vigor and bravery. Please give them a huge round of applause. My machine
Thank you very much, ladies and gentlemen, for your invaluable participation. The people of Kashmir are fighting for their freedom. Inshallah, for them, the day is not far.